सो वेलकम अगेन गाइस। आज हम बनाने वाले हैं घड़ी जावास्क्रिप्ट में। वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ क्लॉक इनटू जावास्क्रिप्ट, ऑब्वियसली यूजिंग HTML एंड CSS मीनवाइल। सो बेसिकली हमारी फाउंडेशन तो HTML ही होगी एंड इनसाइड दैट वी विल जस्ट यूज़ जावास्क्रिप्ट एंड CSS। सो मोटा मोटा ये HTML ही हुआ है बट यूजिंग जावास्क्रिप्ट मोस्ट लाइकली। सो मिट अब्रिविएशन एज ऑलवेज हुआ क्यों नहीं। ओके फिर से करके देख लेते हैं। Let's just try it again and say exclamatory mark, give it again. Okay, done. शायद extensions load हो रहे थे। Okay, so ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लिक नहीं, clock it is clock container। सबसे पहले we have to create something like 3 and 4 divisions, 4 division with classes and classes to identify the divisions. Okay, hour, then there is for minute, and the last one will be for seconds. Okay, so the last one will be for second. Okay, we are done. We are done here writing HTML. This is all HTML that we'll need to create our clock, and then we'll just create some style because थोड़ा ढंग का दिखना चाहिए. We don't want our clock to look pathetic, so mostly it will be CSS. JavaScript भी थोड़ी सी है. So let's just define it, what type of thing we have. So we have a clock. So inside the clock we will just say clock container. Okay, so clock container will be something like with curly bracket, yeah, and we'll just define something from where we should start. We'll start from position, which will be obviously relative. Wait a second, it should be clock, not colk. Yeah, clock. Then we'll just give it a margin, auto. Height will be somewhere around 40. The VW, which did I just wrote W V, yeah VW होगा. Okay, VW हो गया. अभी we'll define the width कि कितना फैला हुआ होगा अपना कंटेनर. So it will be also 30 नहीं 40 रखते हैं. goal, you want it to be rounder. Let's just keep this CSS real quick. So back into the game.
now we are going to do our script, which is basically an interesting part. So script will be, I'll just write it inside the body only. Script to script. Script is the only thing that consumes a lot of time in this. This is probably the only thing that will consume time in this tutorial will be JavaScript. That's it. Nothing consumes more time than this. Let's just keep set interval. Wait a second. Why there is, oh, sorry, set interval. It's just one word. I forgot it. Okay, set interval. I've designed this clock so many times. I'm like, I've designed this into the school, even to the college. So it's basically like memorized to me. Most of the code is memorized to me. So I don't even look at the CSS. I don't even just go and check the CSS whether it's perfect or not. I've just like memorized it in some ways, I would say. And I know everything, like how it works and stuff like that. So basically अब डी डिक्लेयर कर देंगे. डी मैंने ऐसे ही कोई वेरिएबल ले लिया रैंडमली मुँह उठा के. चलो आई जस्ट कीप न्यू डेट. सो डेट फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करें ऑब्जेक्ट. बेसिकली न्यू यूज़ किया मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा. आई डोंट नो और हैव आई एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और अगर नहीं किया तो कर दूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, चेक कर लेंगे बाद. ओके, सो एच टाइम विल बी और आर टाइम विच विल बी गेट hours it is. Okay, so ये basically हमारे hours के लिए होगा. And then we'll have one for minute m time and one for second which will be 1 second m. हो गया done. and ये हो गया s. एक में होगा get minutes, एक में होगा get seconds. तो बहुत बढ़िया, इतना रेडी हो गया. get hours अभी इसको हटा के यहाँ लिख देते get minutes. एंड जस्ट मेक श्योर कि वो HMS तीनों में कैपिटल होना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि वो काम करे, बिकॉज समटाइम्स इट डजंट. सेकेंड्स. ओके, परफेक्ट. एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिफाइन इज द एच रोटेशन, कि मतलब वो आवर का घंटी कैसे घूमेगा, लाइक हाउ इट विल रोटेट. 13 to h time प्लस m टाइम 6 होना चाहिए, नहीं 2. 6 नीचे वाले आएगा. ये थोड़ा लॉजिक थोड़ा सा अजीब है. ये लॉजिक मैंने खुद गूगल से सीखा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था ये लॉजिक क्या होता है मतलब क्लॉक के अंदर का. सो आई जस्ट लर्न इट फ्रॉम गूगल. मेरे को भी नहीं खुद पता ये क्या लॉजिक है. m टाइम 6, h टाइम 30 डिवाइड 2, खुद समझ नहीं है. तो ये लॉजिक मैंने गूगल से बेसिकली उठा लिया है. मैंने इसको बदल के देखा तो ये क्लॉक मतलब बेवकूफ़ी वाला काम करती है. सो यू बेसिकली नीड टू, ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट कॉपी दिस थिंग. एंड इफ़ यू डू रियली वांट टू नो हाउ डज दिस वर्क, यू कैन जस्ट गूगल इट और गो टू ChatGPT एंड डू इट. 6 into second s time, which is our second get seconds. And for hour I'll just say dot style dot transform equals to rotate $sign और inside bracket अपना h रोटेशन. सो बेसिकली यहाँ डिस्क्राइब हो गया है कि ये गोल घूमेगा, डिग्रीज में कर दिया. सेम फॉर एवरी सिंगल वन, जस्ट नाम और नाम चेंज करना है. पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ की है मैंने कोड में यार. होगा, चलो आउटपुट में चेक कर लेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा लगभग से काम पूरा हो चुका है. वी आर डन विथ वर्किंग एवरीथिंग. ओके, everything is done almost. Okay, so h rotation, m rotation, this will be s rotation. Perfect. Okay, everything is working fine, pretty right. Just keep it here, comma 1000. Okay, so this is all what we need. Okay, so now we'll just run this. तो इश्यू मिल गया है कि क्या था, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ की है मैंने, और वो ये था.
रोटेट के आगे असल में कॉमा नहीं होगा, वो कुछ ये सांप जैसा कुछ होता है. आई डोंट नो व्हाट दैट सिंबल इज कॉल्ड बट इट इज़ यूज्ड over there. So that was all that we did in the mistake. So now we are going to open it with a live server, and this time it will be perfect as far as I'm concerned. So it will take a little time. Okay, done. And you can see it's working pretty fine, perfectly fine. You can see the time. सुबह 5 बजे रिकॉर्ड हो रहा है ये सब कुछ. It's fun. Okay, so this was all of it. You can just see this were the signs. So कल मिलते हैं.